मैगसेसे अवार्ड याफ्ता सोनम वंगचुक ने रियासत का दर्जा देने छठे शेड्यूल की मांग करते हुए कहा कि लद्दाख को सर्विस कमीशन चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लिए एक अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि लद्दाख के ग्लेशियर्स का तहफुज बेहद अहम है क्योंकि वह पानी हासिल करने का अहम जरिया है। सोनम वंगचुक ने आगे कहा कि बजट लोगों से बातचीत के बगैर बनाया गया और हाई पावर कमेटी में भी कोई बातचीत नहीं हुई। तरक्की के लिए, विकास के लिए कोई उसके खिलाफ नहीं है। बस इतना चाहते हैं कि विकास हो मगर लोगों से समन्वय के साथ हो। वो छठवें शेड्यूल में यही प्रक्रिया है कि ऑटोनमस काउंसिल से पूछे बिना आप जाके कहीं भी कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो स्थानीय लोग जो कि आदिवासी हैं यानी कि ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स, उनसे आप पूछेंगे तो क्या बुरा हम कह रहे हैं। ये कोई मतलब अगर ब्रिटिश कहें कि भारतीय लोगों से पूछ के हम करेंगे तो शायद हम उसका विरोध नहीं करते, उस बात का, हाँ शासन का करते, मगर उस बात कि अगर वो कहते पूछ के करेंगे। अब ये तो हम भारत में ही हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो भारत में ही वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ के समन्वय के साथ विकास करने की बात हो तो ऐसा किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। यही छठवां शेड्यूल है। मैं लद्दाख के पर्यावरण का और लोगों के संस्कृति का उसके लिए मेरा जीवन है, निहित है। और इसमें अगर कल मैंने 5 दिन का सांकेतिक अनशन किया तो आने वाले दिनों में अगर नहीं होता है कुछ भी, मेरी तो पूरी उम्मीद है कि जो वचन दिया था उस पर अमल होगा। नहीं हुआ तो फिर मैं 10 दिन का करूँगा, उसके बाद फिर रुकूंगा और 15 दिन का करूंगा। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। No, it's not about past 4 years, I can't say, but past decades. What we see in Ladakh is that the glaciers are receding really fast. You have to be there. You have to see it to believe it. You know, glaciers that I used to drive over a bridge on the glaciers, not on streams, are now nowhere near. They are half a kilometer away. So they are going away. And glaciers are our lifeline. Without glaciers, life isn't possible there. Now they are not going silently. So 1 year there's drought and the alternating is floods. So flash floods are happening every other years. You may remember 2010, roughly 1,000 people were lost in flash floods. But after that there have been droughts. So all this is happening because of climate change. But climate change, we often say it's because of US and Europe. But local human activities are also affecting our glaciers, and it came out in a study that was done by Kashmir University that 17 glaciers closest to the highways were melting much faster, which means that even trucks and taxis, especially diesel ones, affect our glaciers. So imagine what would happen if there is heavy mining, industries, dust and carbon, black carbon. They'll be gone in no time, and it goes for not just Ladakh, it goes for entire North India and the South Asian subcontinent. So there are two parts in my view. One is something government can do through policies, and that's the 6th schedule inclusion of Ladakh, which will restrict free for all mining and industries, etc. So there'll be some control of local people on how much to allow, because people from outside will come only with business interests. They'll do what business makes sense, but people there, it's their home, so they'll develop it, but with some reins, some care for tomorrow. So that's all that we expect from 6th schedule. But secondly, I want to say through your medium that it's not only government that can save the Himalayas for all of us in the subcontinent. It's also all of our lifestyles. You know, it's not just Ladakh, it's people living in Bangalore, Bombay, Beijing, Paris, London, New York. How we live. If we continue to live our carefree, business as usual, carbon intensive, climate unfriendly lives, then our glaciers will be gone, and gone for all of you too. So we have to be also responsible citizens. It's not just from the Prime Minister we demand, and that's why I was trying to go to Khardungla to call, give an SOS message to the people of the world also to please live simply in your big cities so that we in the mountains may simply live.